हेलो एवरीवन, तो इस प्लेलिस्ट में अपन हीप डेटा स्ट्रक्चर के अराउंड बहुत डीप में डिस्कस करेंगे एंड आल्सो विल डिस्कस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल. ओके, द फर्स्ट थिंग इन हीप that we want to see is what is the problem that heap is trying to solve and why do we need a heap. So let's talk about the what part, right? कि heap क्या problem हमारी solve कर रहा है. Okay, so होता क्या है कि many computer science problems what we are faced with is we often need quick access to the largest of the smallest element in a data set. Okay, so what we are saying is, for example, let's say मेरे पास यहाँ पे कोई एक तरीके का एक data set है, right? This has a lot of elements in it, right? Let's call this data set. And what I want is to quickly access the maximum or the minimum element in this data set, right? So what I'm trying to ask is, hey, give me the maximum or the minimum element in the data set. Now the important thing that we have to understand here is that this data set is not completed. Completed in the sense कि ये ऐसा नहीं कि बस बन गया, ठीक है? Okay, right? At the same time, we are inserting elements in this data set. At the same time, we are deleting, right? We can delete elements from this data set. And deleting भी वो elements, right? So you can say we are trying to delete the maximum or the minimum element in the data set. ठीक है? Now, this thing that we talked about, right? कि accessing the maximum and minimum element, at the same time inserting any element and deleting the minimum and the maximum element from this data set. Combining these operations, heap is something that can be very efficient here. Okay, अब heap क्या है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, but we'll try to see if we have to solve a problem like this using let's say sorting a list that is already sorted, तो उसका क्या वो कैसे उसको हैंडल करेगा, उस केस में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, so to handle this efficiently we use a heap, a data structure designed to support fast access, insertion and deletion of the maximum or minimum element. Okay, now let's talk about if we had a sorted list, तो ये वहाँ पे कैसा बिहेव करता. ठीक है, तो हमारे पास क्या एक sorted list मैंने बना रखी है, let's say 3, 6, 8 and 100. Okay, if I have to insert an element and let's say insert, and I can insert element, right? तो let me insert let's say 7 here, right? तो अगर आपको इसमें 7 इंसर्ट करना होता तो आप पहले इसकी ढूंढते कि भाई इसकी पोजीशन क्या होगी, राइट? तो पोजीशन तो चलो आपको पता चल जाएगा, बाइनरी सर्च करके आप मे बी लॉग इन में निकाल सकते हो, है ना? ठीक है, ये आपका बाइनरी सर्च पे आपने ये पता कर लिया कि ओके लॉग इन टाइम में मैं 7 को इंसर्ट कर दूंगा इसमें. बट बिफोर इवन डूइंग दिस, राइट, और आफ्टर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ दिस गाय, लेट्स से दिस एलिमेंट इज 7 और इसकी इंडेक्स क्या आते हैं 0, 1, 2 एंड 3, राइट? सो दिस एलिमेंट शुड बी इंसर्टेड एट पोजीशन 2. तो अगर मैं इसको इस पोजीशन पे इंसर्ट करता 0, 1, 2 पे इंसर्ट करता तो लेट्स से 7 मैंने यहाँ पे डाल दिया और 7 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो बाकी एलिमेंट्स को मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? So this is at index 2. Now 8 will be at index 3 and 100 will be at index 4. ठीक है? So time complexity to insert an element in this sorted list, right? This will be big of n, or basically lead to the size of the list. Now another thing is like deleting the minimum or maximum, right? Deleting the minimum or maximum. So if I have to let's say delete the maximum, right? तो इसमें से अगर मेरे को ये delete करना है, right? If I have to delete this, right? Or let's say maybe even deleting this can be constant in nature. But let's say if I have to delete this, right? If I have to delete this, the minimum element, right? तो अगर मेरे को ये delete करना होगा तो होगा क्या कि मेरे को बाकी elements को सही position पे shift करना पड़ेगा. So after deleting, let's say deleting 3 from here, what we will have is we have something like this 6, 8 and 10, right? तो 0, 1 और 2. राइट, सो ये सारे एलिमेंट्स अपनी करेक्ट पोजीशन में आ जाना चाहिए था. तो और इसको भी अब मेरे को लीनियर टाइम लग गया डिलीटिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट एज वेल. ओके, सो फाइन, सॉर्टेड लिस्ट में सारी कोई दिक्कत है, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इन सॉर्टेड लिस्ट एक्सेसिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम थिंग इज काइंड ऑफ कांस्टेंट, राइट? तो अगर मेरे को मिनिमम एलिमेंट पता करना है तो मैं इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ले लूँगा, अगर मेरे को मैक्सिमम पता करना है तो मैं इस एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर लूँगा, क्योंकि दिस इज अ सॉर्टेड लिस्ट बेसिकली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मेरे को दे रखा होगा तो. Okay, so the insertion is linear, deleting the minimum and maximum is linear, and then accessing the maximum and minimum is linear. Okay, so ये sorted list में ये time complexity और space complexity at least हमें ये मिल रही है. space complexity के बारे में छोड़ दो, time complexity मिल रही है linear and accessing the maximum minimum is constant. Heap में क्या होता है? Heap में very interestingly the delete part, the deleting the minimum and maximum is log n of time, right? Insertion is also log n of time. And accessing minimum and maximum element is constant, right? So you can see that the insertion actually got better
deletion of the minimum and maximum got better, and accessing maximum is also constant. So वो तो हमारे सॉर्ट लिस्ट के बराबर ही रहा. तो यहाँ पे हमें इंसर्शन डिलीशन में काफ़ी फायदा मिला, राइट. टू व्हाट इज द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट. वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. कि हमारे पास एक डेटा सेट दे रखा है, मेरे को उसको पूछना है कि भाई तू मिनिमम बता सकता है, मैक्सिमम बता सकता है. एट द सेम टाइम दिस डेटा सेट इज काइंड ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स जो उसमें हमें इंसर्ट करने हैं. एट द सेम टाइम वुड वांट समथिंग लाइक दिस कि भाई यार ठीक है, अब वो मिनिमम या मैक्सिमम वाला कोई एक एलिमेंट डिलीट करना है मेरे को, ठीक है. तो ये काइंड ऑफ ऑपरेशंस के लिए हीप हमारा बहुत बेटर था. क्या होता है हीप, हम एक्चुअली उसको नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट हीप. नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. सो व्हाट वी नो हियर इज दैट heap is a black box, right? So heap is a black box, ठीक है, which gives us these time complexity for these operations, inserting, deleting maximum minimum and accessing the maximum minimum with these time complexities. This is one thing. This is what heap is. What actually inside the heap is, ये हम लोग next video में discuss भी करेंगे, उससे implement भी करेंगे, ठीक है. एंड द ऑपरेशंस दैट वी ट्राइंग टू डू, दीज आर द ऑपरेशंस दैट वी ट्राइंग टू डू, राइट. और एक्चुअली मैंने उसको नीचे भी लिख रखा है, बट लेट मी क्विकली कॉपी दिस, दैट दीज आर द ऑपरेशंस हम ट्राई कर, ठीक है. द ऑपरेशंस आर दिस, ओके. ऑपरेशंस क्या है, डेटा सेट है. डेटा सेट से मुझे पूछना है, कभी भी मैं उसको पूछ सकता हूँ मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, या फिर मैं उसको बोलूँगा कि इंसर्ट कर इस वैल्यू को, या फिर मैं उसको बोलूँगा कि डिलीट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप और डिलीट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप, एनी वन ऑफ देम. वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस, बट these are the kind of operations that I can ask my data set, okay. Now another important thing is कि in sorted list we knew कि हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो एलिमेंट्स होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर बराबर में या फिर इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग में, राइट. डिक्रीज हो रहा है या फिर बराबर है, या फिर डिक्रीज हो रहा है या फिर बराबर है, या इस ऑर्डर में हमारा सॉर्टेड ऑर्डर जनरली लिस्ट का होता है, राइट. बट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अबाउट हीप इज दैट the heap doesn't care about keeping the elements in it, right. तो अगर मान लो कि आपके पास एक डेटा सेट था और उसको आपने इनिशियली क्या होगा, इफ दिस इज द डेटा सेट यू हैव, देन द इनिशियल डेटा सेट उसको बेसिकली आपने ये हीप डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया होगा, ठीक है. तो ये हीप, अब ये हीप पे आप एक क्वेरीज कर रहे हो, राइट, कि भाई मुझे मिनिमम बता दे, है ना. या फिर आप उसको बोलोगे कि इंसर्ट 30 into it, राइट. इफ यू से, और यू कैन से डिलीट minimum from here, right. So these are the kind of things you will ask this heap data structure. Now what this property means is कि this heap data structure, right, ये जो heap data structure है आपका, this structure, it doesn't care about keeping everything in perfect order. It just care about these part that matters, right, like storing the minimum element. उसके अराउंड वो थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्डर में रखा होगा, पर ऐसा कोई बहुत डिस्टिंक्ट ऑर्डर नहीं होगा भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पूरे एलिमेंट्स उस हीप डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड हो, राइट. So the point here is it doesn't care about keeping everything in perfect order, this data structure, and it only cares about the part that matters, right. कि मिनिमम एलिमेंट को उसने कहीं पे ऐसे स्टोर करा होगा, तभी तो आपको कॉन्स्टेंट टाइम में एक्सेस कर पाओगे उस मिनिमम, राइट. सो इट ओनली केयर्स अबाउट द पार्ट दैट मैटर्स, और उसको थोड़ा सा कुछ ऑर्डर में रखा होता है या फिर कहीं पे रखा होता है ताकि उसको आपको कॉन्स्टेंट टाइम में एक्सेस कर सको. सो दिस वॉज अबाउट, वी डिस्कस्ड, लेट्स क्विकली रिकैप. तो वी डिस्कस्ड द व्हाट पार्ट ऑफ हीप, राइट, and we discussed the why part of heap, right. what मतलब कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं हीप से, एंड why मतलब क्यों हमें हीप चाहिए, राइट, कंपेयर टू एक सॉर्टेड लिस्ट हमने ट्राई किया. आप और ऐसे और डेटा स्ट्रक्चर्स ट्राई कर सकते हैं, राइट, कि वो डेटा स्ट्रक्चर्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एंड देन यू विल सी दैट why heap is better, which we will start implementing for the next video. Okay, so that's it for this video. Thank you, and I'll see you with an implementation of some part of heap, or maybe हमें थोड़ा सा और इंट्रो पढ़ना है इन डिस्कसिंग अबाउट द मीन हिप एंड मैक्स इन द हिप. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अराउंड दैट. टेक सी यू सून, बाय.